Thank you for the invocation song. I now call upon Advocate Ms. Rupa Davalgi to welcome and introduce our today's chief guest. Please, ma'am. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को सादर प्रणाम। व्यासपीठ में आयोजित माननीय श्री गोविंदाचार्य जी, फाउंडर BVS, श्री शंकरन्ना मुनवल्ली जी, श्री सुरेश अग्निहोत्री जी, श्री अशोक टंगसाले जी और हमारे इस महिला आयोजन में सहभागित्व लिए हुए IMSR के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद KH जी, श्रीमती शारदा पाटिल मैम and other women dignitaries, Srimati and Dr. Anita Tilve, and another co-convener of BVS, Vivek Urankar. And Sabhi, I bow to the Matru Shakthi Gan who came here and supported us in the all form and the Sajjan Shakti along with the Matru Shakti. Today we hereby organized Matru Shakthi Sangam, a 2 days women empowerment seminar for the women. I heartily welcome you all, and I just begin with a slogan, Yatra Narestu Pujate Ramante Tatra Devataha. Where the woman will be worshipped, there God will reside. Because the universal motherhood, that is Ganga Mata, Gita Mata, Go Mata and Dharti Mata, or it is learned that it is the contributions, blessings, tolerance and holiness of the Indian civilization. Today we here gathered to celebrate the woman power, that is Matru Shakti, because without her support the development is somewhere is not that much supportive and completed. For the reason I take up that we conveyed here the 2 days seminar, that to establish the linkage of family relations, that is the bonding. The woman, whatever wants to develop, he is supported by the nature and family. She is the main, as we say, the backbone for the society, family and nation building. So, to celebrate her contributions, we gathered here. And Matru Devo Bhava is not just a slogan, it is practiced even today in many parts of the country. Today I heartily welcome all of you for the seminar. Those who have mostly missed, some most important persons who are unfortunately not attended. Likewise, there is Srimati Kamla Narendra Bhushan, Changanuru, Kerala, a staunch follower of RS Samaja. Even today in most commercial tourist place Changanuru, she maintains a rich library and Homa Havana every day. A widow maintaining the glory of RS Samaja in a Christian dominated place, that is Kerala. That is really admirable. So like these persons we have invited for this session. Another one I would like to share with you, Srimati Dr. Shanta Bai from Bangalore. She travelled from Bangalore. She is 78 years old, a widow who has travelled across the ocean to spread Haridasa Sahitya. In general, Jagannatha Dasara Harikate. In particular, she wrote commentaries on all 32 volumes and donated to readers freely. In recognition of Dr. Shantabai's contribution to devotional field, we have facilitating her today.
It is an honor and inspiring to the young people who are working for devotion and dedication. Another lady, Saubhagyavati Ratnamala Kulkarni, Kavita Mishra, like this, there are so many women who are the pillars for the young India. So we have to facilitate and take some inspiration to move the Matru Shakthi Sangam forward. Today we organized here special persons through the nationwide. I will conclude my theme, what is going to be for the 2 days, with the Kuputro Jayati Kumata Na Bhavati. It means there will be some bad children maybe, but no bad mother will exist. We wish all parents and children of this land to recollect the glory of the country and remember the contribution of great mothers like Kaushalya, Yashoda, Jijabai, Vidula to re-establish women honor and culture. Empowerment is the byproduct of affection and devotion. So with these lines, we accept blessings, inspirations and support across the country to make this event unique and successful. We will discuss in upcoming sessions to solve the problems of working women, education, girls and also senior citizens. So I want your all support in all the sessions from all the dignitaries on the dais, off the dais, and I welcome you once again with wholeheartedly. And for the time, whatever you are giving, it is very precious for both of us. Thank you. Thank you, ma'am. I now request Shri Suresh Agnihotri to introduce our other guests. मातृ शक्ति संगम के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों, बहनों और भाइयों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। परिचय से पहले एक श्लोक है जो प्रातः स्मरण में हम लेते हैं। अरुंधति अनुसुईया चा सावित्री जानकी सती द्रौपदी कन्यगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मी अहिल्या चन्नम्मा रुद्रमांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा चा प्रणम्या मातृदेवता। मंचस्थ 2 दिन के लिए जिनके हम मार्गदर्शन में रहने वाले हैं, उनके परिचय से मैं प्रारंभ करता हूं। मानवर के.एन. गोविंदाचार्य जी। के.एन. गोविंदाचार्य जी का जन्म तो तमिलनाडु के एक गांव कोडिपाक्कम, जैसा उनका पूरा नाम है कोडिपाक्कम नील मेघाचार गोविंदाचार, वहाँ हुआ। पिता उत्तर प्रदेश के काशी, वाराणसी कहते हैं, वहाँ पर अध्यापक थे। बचपन से वहाँ उनका रहना हुआ और प्रारंभिक शिक्षा काशी में ही हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैथमेटिक्स में विज्ञान से स्नातक किया 1964 में। इसके बाद वो संघ के प्रचारक निकले। जन्म काशी तिरुपति, बालपन काशी, शिक्षा संस्कार के साथ में कर्मभूमि बना बिहार प्रांत। बिहार प्रांत में आपने काम किया और वहीं में आप विद्यार्थी परिषद के काम में आए। संघ की योजना जिन जिन क्षेत्रों में हुई वहाँ पर गोविंदाचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। 1975 में संपूर्ण भारतवर्ष के विद्यार्थियों के आंदोलन के वो रणनीतिकार रहे, जो बाबू जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का जेपी मूवमेंट पूरे देश में हुआ।
बाद में पूरे देश में उनकी योजना हुई और 1988 में उनको भारत के एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में काम सौंपा गया। 12 वर्षों तक आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन रहे। इसके बाद कुछ इस देश को सही समझने के लिए जो उनके मन में विचार आया, ऐसा वो 2 वर्ष के लिए अध्ययन अवकाश के अध्ययन यह देखा कि ये इस देश का एक पहलू और इतना बड़ा है जहाँ पर सत्ता से कई गुना बड़ा समाज का काम करने के लिए लोग अनवरत लगे हुए हैं। कहीं तो कोई वर्षा की एक एक बूंद को सहज ही संयोजने में लगा है, कहीं कोई भूमि की सहज उर्वरता वापस कैसे लौटे, कहीं कोई महिलाओं के क्षेत्र में बड़े काम हैं, सेवा के क्षेत्र में है और शिक्षा में नए नए नवाचारों पर कोई काम कर रहे हैं। इन से के कामों का जहाँ एक अनोखापन है, जहाँ उनके कामों की अपनी सुंदरता है, वहीं एक आपस में एक दूसरे से परिचय न होने के कारण एक बड़े लक्ष्य की तरफ जो आगे ये देश जाए वह ध्यान दिया। तो उन्होंने इसका एक सूत्र निकाला कि जिन्होंने साहस से कुछ काम किया है, थोड़ी सी पहल की है और कुछ प्रयोग किए हैं, तो साहस पहल प्रयोग के सूत्र के आधार पर पूरे देश में संवाद, संवाद के बाद सहमति और सहमति के बाद सहकार, ऐसा विचार करके 2004 में एक कार्यक्रम हुआ काशी में और उसमें नाम दिया भारत विकास संगम। रचना क्षेत्र में रचनात्मक काम करने वाले लोगों का यह एक मंच है जहां अपने अपने कामों की खूबसूरती और अपने काम को और उत्तरोत्तर बढ़ाने के साथ आपस में संवाद की एक प्रक्रिया है। ऐसे उनके 3 प्रमुख काम हुए और एक राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन। आंदोलन के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य हुआ जब देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए सोनिया गांधी का नाम आया, तब गोविंदाचार्य के मन में बड़ा विचलन हुआ, क्या कोई एक भी एक व्यक्ति नहीं है जो देश की बागडोर संभाले। तब उन्होंने इस राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के नाते तत्कालीन राष्ट्रपति से बात करके और इस को एक बहुत बड़े संकट से भारत को बचाया। गोविंदाचार्य जी का तीसरा काम, इसी काम के अंतर्गत अभी गोविंद जी ने भारत की 3 नदियों की यात्राएं की हैं। 2 वर्ष कोरोना के कालखंड में माननीय गोविंदाचार्य जी ने गंगा के उद्गम स्थान से गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की एक यात्रा, दूसरी यात्रा मध्य प्रदेश में नर्मदा की अमरकंटक से अमरकंटक, और तीसरी यमुना की यात्रा जो दिल्ली से ऊपर विकास नगर से होकर के प्रयाग में समाप्त हुई। अभी गोविंद जी लगभग 400 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के अंतर्गत 11 अक्टूबर को वह नरौरा, जहां बांध बनाया गया गंगा का, वहां से निकल करके और कानपुर के पास बिठूर में इसका समापन करेंगे। तीसरा गोविंद जी का काम रचनात्मक आंदोलन के साथ साथ में इंटेलेक्चुअल जो देश में लोग हैं, ऐसे कौटिल्य शोध संस्थान के नाम से काम है। इन तीनों की बड़ी ही खूबसूरती के साथ गोविंदाचार्य जी काम कर रहे हैं। उनका पूरा परिचय, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए एक बहुत बड़ा पाथेय है, इसलिए उनका पूरा परिचय मैंने कराया। श्री अजीत दादाजी तुकदेव, एक बहुत बड़ा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा, उसके क्षेत्र में आप बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं और उसके वो संस्थापक अध्यक्ष हैं। श्री अशोक जी टाकसाले, आप महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले हैं और आप सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं। इस भारत विकास संगम के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं और ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर 2 दिन के लिए मातृ शक्ति संगम का हो रहा है, ऐसा इस कार्यक्रम के आप पालक के रूप में पूरे देश में जहाँ महिलाओं का मातृ शक्ति संगम होगा उसके आप पालक के रूप में रहेंगे। श्री चंद्रशेखर धवलगी, चंद्रशेखर धवलगी इसी हुबली रहने वाले, तो मूलतः जन्म में विजापुर कर्नाटक, विजयपुरा जिसे हम कहते हैं वहाँ का है,
कर्मभूमि इनकी ये हुबली हुई। चार्टेड अकाउंटेंट हैं और संघ के प्रारंभ में स्वयंसेवक, और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ था हुबली की ईदगाह में, जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देकर के तिरंगा झंडा फहराने आई, उसमें ये इनकी भूमिका थी। गिरफ्तार भी हुए थे चंद्रशेखर धवलगी। भारत विकास संगम के आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में हैं। और डॉक्टर अनीता तिलवे जी, 2 वर्ष पहले ही ये जो आज कार्यक्रम यहाँ हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि में वो हैं, बहुत साहसी और गहरी समझ रखने वाली बहन हैं, गोवा से हैं। उनका जितना मेरा संपर्क 2 वर्षों में रहा उतना ही परिचय। ठीक ठीक, धन्यवाद। डॉक्टर वासुदेव जी अग्निहोत्री, हाँ, आप सेडम के रहने वाले हैं, ये कलबुर्गी जो जिला है, और प्रोफेसर है, कन्नड़ के साहित्य पे काफ़ी काम किया है। कोई 40 वर्ष पहले आप उस्मानिया विश्वविद्यालय में आपने शोध कार्य जो किया था भगवत गीता पर, उसमें आपका रहा है। डॉक्टर जिनको मैं जान रहा हूँ शारदा जी पाटिल, बड़ा सौभाग्य है यहाँ जो विधि संकाय है, ला विभाग हम कहते हैं, पुराना है और बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त है। लगभग कुछ 50 वर्ष हुए इसी कैंपस में, उसकी आप प्रधानाचार्य हैं। शेष वर्ष हम चाहते हैं चंद्रशेखर जी धवलगी ही देंगे। धन्यवाद। अब 2 पर्चे ऐसे छूट गए। हमारे गेस्ट हैं शंकरण्णा मुनवल्ली जी, केएलई जो प्रसिद्ध संस्था उत्तर कर्नाटक में है, केएलई संस्था के डायरेक्टर है। हमारे सभी कार्यक्रम में भारत विकास संगम के दिल्ली की जो सृजन शक्ति संगम हुआ उनमें में भाग लिए थे। हमारे जितने भी कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग देते हैं। इस कार्यक्रम में गेस्ट के नाते आए हैं और पूरा ये जो केएलई संस्था है IMSR, जो हम ऑडिटोरियम में बैठे उनका ये एक अंग संस्था है IMSR ऑडिटोरियम के कॉलेज में, वो भी हमारा ये कार्यक्रम में सहयोगी है। GK लॉ कॉलेज जो इधर ही ये कैंपस में पढ़ता है, वो भी हमारे संस्था के ये सहयोगी संस्था एक कार्यक्रम में जुड़े हैं। हमारे और एक इधर विवेक उरणकर बैठे हैं जो टैक्स प्रैक्टिशनर है, भारत विकास संगम के जिला संयोजक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी डायरेक्टर हैं ये IMSR हमारे, और सक्रिय पूरा कार्यक्रम में शुरू से हम जुड़े हैं। जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है, ये छोटा सा परिचय जो छूट गया मैंने किया। धन्यवाद। जिनका परिचय सबका दिए थे, सुरेश अग्निहोत्री, वो कानपुर से रहने वाले, मूलतः हमारे भारत विकास संगम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है और 12 साल तक संघ के प्रचारक रहते हुए अध्यापन विद्यावर्ती के स्कूल में शिक्षक के नाते काम किए हैं। पूरा जो भी भारत विकास संगम का है, देश भर में सभी राज्यों में प्रवास करके ये संगठन बनाने के सक्रिय में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. As the light destroys darkness, in the same way, knowledge destroys ignorance. We all bow to Ma Saraswati. May she have her blessing upon us. I now request our chief guest, Shri Ajit Dada Tukdeo, President, Ved Vasudev Prarishthan, for the lighting of lamp. And after this, Srimati K. Banu Krishna, Managing Director and Master Trainer, Virtues of Abacus Academy and Smile Foundation, to perform on this event. Thank you. Kalyanam Arogyam Dhanasamgatah Shubham Kurutvam Kalyanam Arogyam Dhanasamgatah Shatru Buddhi Vinashaya Deepajyotir Namostute Deepajyotir Namostute
दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य दृष्टे गृहे दीपम् तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् I request Srimati K. Banu Krishna, Managing Director and Master Trainer, Virtues of Abacus Academy. ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్యము వేడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్యము వేడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్యము వేడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు అందనింత బుల్లితల అరచేతి వాణిక్యము పంతమాడి కంసుని పారివాజము అందనింత బుల్లితల అరచేతి వాణిక్యము పంతమాడి కంసుని పారివాజము కాంతుల నోడు లోకాల గరుడ పచ్చమూసల కాంతుల నోడు లోకాల గరుడ పచ్చమూసల చింతన మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు చింతన మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు చింతన మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిటి ముత్యము వేడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు ముద్దుగారే యశోద ముద్దుగారే యశోద ముద్దుగారే యశోద Thank you, ma'am, for the wonderful performance. I now request
Shri Ajit Dada Tukdev to deliver the inaugural address. Please, sir. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज का दिन या आज का क्षण एक बहुत ही अद्भुत और एक चमत्कारिक ऐसा क्षण है। ऐसे ही चमत्कार होते जाते हैं, चमत्कार निर्माण करने वाले जिन्हें चमत्कार हम समझते हैं। भारत विकास संगम, वैसे तो भारत विकास ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। ये देश 1000 या 1200 साल के आक्रांताओं की परंपरा या अत्याचार के अगर ये वर्ष छोड़ते हैं, ये दशक या शतक हम छोड़ते हैं, एक सहस्त्र छोड़ते हैं, तो भारत की विकास के अविरत धारा तो शतकों से नहीं युगों से चल रही थी। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ये सारी परंपराओं का मिश्रण ही भारत को यथार्थ जानने के लिए भारत का यथार्थ वर्णन था। और मुझे ऐसे लगता है कि करीबन 1200 सालों से निद्राग्रस्त हुए समाज को, निद्रिस्त हुए समाज को जिन्होंने जागरूक करने का प्रयास किया। वैसे ये तो भूमि थी नहीं, ये देश था। और ये देश था ही नहीं, ये ऋषि मुनियों ने जिसका चिंतन मनन करके जिसे राष्ट्र का दर्जा दिया, ऐसे एक ही राष्ट्र ये भूतल पर या इसी पृथ्वी पर एक ही राष्ट्र उपस्थित है और वो है भारत। और कोई राष्ट्र है नहीं, बाकी दे आर ऑल नेशन, दे आर जस्ट बाउंड्रीज है उनके पास। ये भारत के लिए कोई बाउंड्री की समस्या थी नहीं। हम लोगों ने वो समस्या हमें लोगों ने डाल दिया और हमने वो स्वीकार कर ली। मुझे जब भी लगता है, मैंने आदरणीय गोविंदाचार्य जी का नाम बहुत सालों से मैं सुन रहा था और आज ऋषितुल्य जो शंकरराव मुनवल्ली सर है, जो उनको भी देखा, ऐसे महापुरुष जब भी सब कुछ छोड़ के चिंतन और मनन के रास्ते राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर लेके जाना चाहते हैं, मैं ऐसे समझता हूं कि यह सालों की तपस्या का फल है। क्योंकि जहां गंगा माता, गौ माता, गीता माता और भारत माता की जहां साधना होती है या जहां पूजनीय माना जाता है, वहां विकास की बात अलग करना, यानी समझो कि हम नादानी के दौर से गुजर रहे हैं। हम लोग नादानी के दौर से गुजर रहे हैं और नादानी का अभी वक्त खत्म होने की जरूरत भी है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे लगता है वही क्षणों को यादगार, वही क्षणों को प्रत्यक्ष रूप में, सगुण रूप में लाने की कोशिश में आज की भारत विकास संगम के एक अधिष्ठान है। थोड़ा सा बोलना उचित भी था। एक स्वयंसेवी संस्था है वेद वासुदेव प्रतिष्ठान, उसका मैं शायद अध्यक्ष कहने से कोई अध्यक्ष नहीं होता है। इस भूमि पे अध्यक्ष तो बहुत सारे हो गए ऋषि मुनियों के, उसके बाद में बस हम उनके गोत्र से है, सूत्र से है, इतना बोलना ही मुझे काफी लगता है। मगर प्राचीन काल में भारत की विकास की जो धारा, जैसे मान जाते हैं कि जीडीपी उस वक्त हमारा 54% था पूरी दुनिया का, और वो आज कितना है हम समझ नहीं पाते। मगर जो आज सरकार अपना काम करे और समाज की धारणा लेके समाज का जिन्हें समाज बोझ नहीं लगता है, जिन्हें समाज हर व्यक्ति उन्नति की काबिल लगती है, हर व्यक्ति के प्रति जिनकी श्रद्धा है, ऐसे महापुरुषों का यहाँ मिलना, मुझे ऐसे लगता है राष्ट्र के उद्धारण का एक वक्त भी निश्चित होता है। और राष्ट्र के वही उद्धारण को लेके हम अपनी तरफ से, समाज ने हमें क्या दिया, इससे ज्यादा हमारे पूर्वजों ने भी, और पूर्वजों को भी समाज ने बहुत कुछ दिया था। ये साक्षात वेद संपन्न राष्ट्र है। यहाँ किसी ने हमें कुछ दिया, ये पूछने से पहले हमने जन्म के बाद अपने राष्ट्र को क्या दिया, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ये सवाल पूछते पूछते थोड़ा सा हम बड़े होने, यानी बड़ा और उम्र से भी बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जाने कि अपनी परंपरा क्या थी, हम जाने कि अपनी संस्कृति क्या थी। संस्कृति और परंपरा का वारसा और ये व्रत हम भूल गए, सालों से, दशकों से, शतकों से भूल गए। मुझे ऐसे लगता है कि वही बातें अब से फिर से ज्यादा, बस ये कोई मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बस आज का एक सामान्य गैदरिंग है। यहाँ सब व्रतस्थ लोग हैं, व्रतधारी लोग हैं। यहाँ 80 धारा व्रत जिन्होंने धारण किया है, ऐसे महापुरुषों की यहाँ उपस्थिति है। इन सबको हम आदर्श रखते हुए आने वाला काल, आज हम मिले हैं, 1 महीने के बाद मिलते हैं, तो आज से ज्यादा हमने 1 महीने में कुछ करना चाहिए।
हम यही उद्देश्य लेके चलते कि हम सालों साल मिलते रहे और हम सालों साल अपने से पूछे क्या कि मैंने 2021 में कोरोना तो होना है या नहीं होना अलग बात है, मगर मैंने किया क्या। हम लोगों ने समाज के प्रति अगर करना चाहते तो मेरी तरफ से, मेरी ओर से, मेरी व्रत में कितना संकल्प को लेकर अगर मैं जा रहा हूं तो वो संकल्प कितना सिद्ध होने की मार्ग पर है, तो उसकी जब भी उसका भी कोई ऑडिट निकालना है, ये एक इसका भी ऑडिट होना है कि मेरा संकल्प कितना सिद्ध हो गया। तो मैं ऐसे मानता हूं कि ये सिद्धता का आज का ये पूरा एक ऑडिट है कि हम क्या करना चाहते हैं। मातृ शक्ति संगम, मातृ सृष्टि पूजन करके हम उत्तर प्रदेश में, बिठूर प्रदेश में चलाते हैं। इतनी ज्यादा इलिटरेसी है, इतनी ज्यादा पॉवर्टी है, इतने ज्यादा लोग इतने ज्यादा भयभीत है, सब कुछ है। तो मैं ऐसे चाहता हूं कि मैं इसके वास्ते, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ वेद वासुदेव प्रतिष्ठान, ए स्पिरिचुअल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आई इनवाइट यू ऑल फॉर अ गैदरिंग, for a social gathering, for a gathering which can show that immense strength of Matru Shakti in that Pradesh. Uttar Pradesh, मैं being a Maharashtrian also, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आज के मंच के आसीन जो सब महानुभाव है उनको मैं बहुत ही दिल से वंदन करता हूं, और सुरेश दादा की वजह से आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। इट इज़ रियली अ वेरी ओपन प्लेटफॉर्म। हर कोई आता है, चाहता है अपनी मनपसंद और अपनी सब चीज़ें जो करना चाहते हैं। मैं ऐसे चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर मातृशक्ति को, और एक बात है, मुझे ऐसे लगता है कि जिनको जरूरत है वो कभी आके बोले कि हमें क्या चीजों की जरूरत है, वो बोले। हम करना चाहते हैं, जिनको हम पूछते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरे बारे में, हम लोगों के बारे में ऐसे होता है कि उनको हम ये करते हैं, निश्चय करें कि उनको ये देना है। हमें ये चाहिए कि मातृशक्ति जो सही में अपने गांवों में है वो क्या चाहते हैं हमसे। ऐसी एक मेरी खुद की एक सजेशन भी थी कि वो लोगों से पूछे कि आपको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए। हमारे पास साधन है तो वो अपने गुणों से संपन्न है, और साधन और गुणों से संपन्न अगर समाज बन जाए तो मुझे ऐसे लगता है गोविंदाचार्य जी और बसवराज जी पाटिल आज आदरणीय वो नहीं है आज, मगर मैं मानता हूं कि ये बुजुर्ग नहीं है, ये साक्षात दीप स्तंभ है समाज के, और इनके प्रति अनुसरण करना मैं इसे समझता हूं। बस मुझे बोलने के लिए अवसर दिया सुरेश दादा, मैं बहुत ज़्यादा इस मंच पर आभारी हूं, और मेरे 2 शब्द मैं पूरे करता हूं। Thank you, sir. I now request Srimati Anita Tilve to express her views. Please, ma'am. दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भयदुर्ग विनाशिनी प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गति नाशिनीम। दुर्गम मार्ग पर चलते समय आने वाले संकटों का नाश करने वाली और दुर्गति से ऊपर उठने को हाथ देने वाली दुर्गा देवी को मेरा प्रणाम। आप सभी के शरीर में स्थित, शक्ति रूप में स्थित आदि शक्ति को भी मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित भारत विकास संगम के संस्थापक तथा भारत विकास संगम के सभी कार्यों में जो प्रेरणा स्रोत है वो माननीय श्री KN गोविंदाचार्य जी और बाकी सब अतिथिगण, सामने उपस्थित बहनें, भाइयों, आप सभी को भारत विकास संगम की तरफ से मैं आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। घर से अगर 2-4 घंटे बाहर जाना है तो कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है या सोचना पड़ता है, यह हम सब महिलाओं को मालूम है। और यहाँ तो आप अपना घर बार छोड़ के 2 दिन के लिए पूरे आए हैं, और 1 दिन आपने ट्रैवल में गुजारा है, बाद में भी 1 दिन आप गुजारेंगे। सो पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप सब वीकेंड को घर छोड़कर अपनी बहनों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उन्नति के लिए, आप सब के लिए हम इन 2 दिनों में देखेंगे कि इस क्षेत्र में कार्य करते हुए उनको क्या समस्याएं आती है, उसका हल कैसे करना है, उनकी तरफ से क्या लेना है, और कोई महिला किसी कार्य क्षेत्र में है, दूसरी किसी में है, तो इन सब का आदान प्रदान इन 2 दिनों में हम इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमें यहाँ से प्रेरित होकर जाना ही है, और बाद में
अपने अपनी जगह पर जाकर जो महिलाएं, जो बहनें यहाँ नहीं आ सकी, उनको प्रेरित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप सबको है। सो इसीलिए बीच बीच में हमने ऐसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब में शक्ति है, लेकिन सिर्फ वो शक्ति हमें कभी महसूस नहीं होती। वो शक्ति का आविष्कार हमने करना है। हम सब रोटियां बनाते हैं और रोटी से जब वो भाप निकलती है, उसका जो दाह होता है वो प्रत्यक्ष वो ज्योत से भी ज़्यादा रहता है, वो हम सबको मालूम होगा। उसे कहते हैं लैटेंट हीट, उसे कहते हैं सुप्त शक्ति। तो वो सुप्त शक्ति हम सब में है। ज़रूरत क्या है कि उस शक्ति को जागृत करना, और इसीलिए ऐसे संगम की ज़रूरत है। उसका आविष्कार तभी होता है जब हम उसको जागृत करते हैं। उसका और एक उदाहरण जो आविष्कार का इधर बैठा है एडवोकेट रूपा जी, हमने एक तय किया 1 साल पहले कि ऐसा मातृशक्ति संगम करेंगे, और इन्होंने जिम्मेदारी ले ली और आज आप उसका रूप देख रहे हैं। एक बार उनके लिए भी हम तालियां बजाएंगे। रिसेंटली उन्होंने गोविंदाचार्य जी के फिलॉसफी पर आधारित प्रकृति में महिलाओं का क्या योगदान है, इसके ऊपर डॉक्टरेट भी की है। तो हम जब अगर ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने वो मिलजुल के करना है, और इसीलिए हमने एकत्रितकरण और एकत्रित रहना वो बहुत ज़रूरी है। महिला सशक्तिकरण एक तो सिंगल हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो अगर हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं तो कुछ भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा संख्या में हम और भी महिलाओं की तरफ जाएंगे और भी बहनों को इस कार्य में जुड़ाएंगे, क्योंकि हमें देखना है कि इसी के साथ महिलाओं का विकास करना है। और जो महिला अपने स्तर से थोड़ी नीचे है, जिसको कुछ समस्या है, उनको उठाकर अपने तक लाना, ये हमारी प्रॉपर जिम्मेदारी है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप सब लोग इधर आए हैं, बहुत खुशी हुई, और इस 2 दिन में बहुत इफ़ेक्टिवली और बहुत अच्छी तरह से हम घुल मिल जाएंगे, समस्याओं का हल देखेंगे और वही लेकर जाएंगे अपने अपने जहाँ पे, और विकास की तरफ इससे ही बड़ा योगदान होगा। धन्यवाद। Thank you, ma'am. I now request Shri K.N. Govindacharya, founder BVS and Great Grand Session, former BJP National General Secretary, to present the keynote address. Please, sir. ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भारत विकास संगम और कई अन्य संगठनों के सहयोग से हुए आज के मातृशक्ति संगम में मंच पर शोभायमान आदरणीय रूपा जी अध्यक्ष महोदया और समुपस्थित विशिष्ट महानुभाव जैसे अजीत जी हैं, सुरेश जी हैं, सभी स्वनामधन्य हैं। ऐसे समस्त महानुभाव, यहाँ समुपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और सरस्वती की साधना में लगे सभी साथियों, विशेष है आज का अवसर। 2 दिनों तक साथ रहेंगे और विचार विमर्श में मैं भी समझने की कोशिश करूंगा कि एम्पावरमेंट किसको कहते हैं, फिर एम्पावरमेंट का स्वरूप क्या होगा, उसके लिए हर्डल्स क्या होंगे, डिस्ट्रैक्शन के कहाँ क्या पोटेंशियल्स हैं, उसके साधन क्या होंगे, उसका टीम वर्किंग मेथड का क्या रूप होगा, उसके डायमेंशंस क्या होंगे, उसके डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, उसके पैरामीटर्स इवैल्यूएशन के क्या हों,
हम हासिल किए हैं, इसका पैरामीटर मापदंड क्या हो, इन सब बातों को आप सब विचार करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और उसी में से मैं कुछ सीखने समझने के लिए यहाँ हूँ मातृशक्ति संगम में। सवाल हैं कई एक जिन पर मैं भी जानना चाहूँगा कि क्या सोचा है, महिलाओं की ओर से क्या पर्सपेक्टिव है, क्या उसका विशेष टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट का आज के कंटेक्स्ट के साथ जोड़कर क्या हो सकता है, उसको थॉट के बाद एक्शन फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है, ये सब चर्चा होगी ऐसा मैं समझता हूँ। और तदनुसार विचार विमर्श सभी मिलकर करेंगे। कुछ टैंजिबल कुछ इंटैंजिबल टारगेट्स रखेंगे। जैसा अजीत भाई ने कहा कि फिर से रिव्यू एंड फॉलो अप, तो विचार तो कर लिया, फिर उसके एक्शन के बारे में तय भी कर लिया, तो बीच बीच में रिव्यू और उसका फॉलो अप ये भी करने की कोई ना कोई मैकेनिज्म बननी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। ये सब करना वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, ऐसा लगा। आज जिस स्थिति में है दुनिया, सबको उसका प्रकृति विध्वंस का एस्पेक्ट तो समझ में आ रहा है। यूरोप में ही सूख गई है नदियाँ, यूरोप में ही पंखा क्या एसी की बात होने लगी। बहुत विचित्र स्थितियां बन रही हैं। भारत का कृषि पंचांग डिस्टर्ब हो गया है, और ये बात अब ड्राइंग रूम में या सेमिनार्स की बात नहीं बची, तो जिंदगी में भुगतने लगे हैं लोग। ऐसी स्थिति में ये है कंटेक्स्ट जिस पर हम विचार करें, ये मेरा निवेदन है। उसी तरह से कमोडिफिकेशन ऑफ वीमेन, ये मार्केटिज्म का अनिवार्य परिणाम है। कंज्यूमरिज्म एंड परमिसिवनेस, ये उसका नेचुरल रिजल्ट है। उस रिजल्ट को भारत की महिला कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये दुनिया भर के लोग देखेंगे। दुनिया भर के लोग सीखने की स्थिति अगर है, जैसा अजीत भाई ने कहा, भारत और भारत ही है, इसलिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इसलिए इसमें कन्वेंशनल मेथड्स नहीं चलेंगे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होना होगा। उसके लिए स्ट्रक्चर भी अलग प्रकार का होगा, मैकेनिज्म भी अलग प्रकार का होगा। उसके लिए आवश्यक है हम बेसिकली एक बात दिमाग में रख लें, ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें भले ही ग्लोबल इसका इम्पैक्ट है, लेकिन हम अपने सूत्र को न भूलें, थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। ये हमको समझकर चलना है। और इसके साथ साथ जब हम सोचते हैं तो एक विशेष अब थॉट पैटर्न में ही पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इटसेल्फ, अबाउट द मेथोडोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट इटसेल्फ। किसको हम डेवलपमेंट कहेंगे? जो अभी का डेवलपमेंट है उसमें ग्लोबल पर तो 10-20 साल के अंदर दुनिया की आबादी 600 से 700 करोड़ हो गई, लेकिन $1 से कम में ज़िंदगी जीने वालों की संख्या भी करोड़ से बढ़कर 135 करोड़ हो गई है। जो विषमता बढ़ी है, भारत का 1% वर्ग एसेट्स के 57% का मालिक है। आज विषमता तो इतनी है, महंगाई बेरोजगारी का तो कुछ कहना नहीं। अब तो सब कहने लगे हैं ना कि महंगाई तो वैश्विक है, ग्लोबल है। यहाँ हुआ तो क्या विशेष, क्या हुआ क्या मतलब, मनुष्य के जीवन और अस्तित्व से संबंध है। हाँ, कोई लोग जरूर कह रहे हैं
अरे यहाँ सब बर्बाद भी हो जाएगा दुनिया का, ये प्लेनेट बर्बाद होगा तो हम दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे। बट हु विल बी द फॉर्चुनेट वंस? आज जो स्थिति है, ये भी कहने का साहस दुस्साहस लोग करने लगे हैं कि अरे भाई दुनिया चलने के लिए तो 55 करोड़ आर सफिशिएंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द ग्लोब। क्यों हम 650 करोड़ को ढोएंगे? तो किनको नहीं ढोना? तो दोज हु कैनॉट परफॉर्म शुड पेरिश। हु विल डिसाइड व्हाट? ये स्थिति है। तो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है कि 500 साल हमने मानव केंद्रिक होकर सोचा, मैन इज सुप्रीम, मैन इज कॉन्करर ऑफ नेचर। उसमें से जो हमने कॉलोनियलिज्म, मिलिटरिज्म, इंपीरियलिज्म, स्टेटिज्म, वर्ल्ड वॉर्स, और उसके बाद स्टेटिज्म इन इकोनॉमी, उसके बाद मार्केटिज्म, ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी रन बाय मेगा कॉर्पोरेट्स, ये हमने यहाँ तक पहुँचे हैं ना। इसलिए इसमें जो कन्वेंशनल लड़ाई के तरीके हैं वो नहीं चलेंगे। The kind of equipment of surveillance they have that cannot be matched by just the conventional methods. उसके लिए पहला तो पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। माँ की तरफ बढ़ना है, यानी प्रकृति की तरफ बढ़ना है, यानी एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट की 500 साल की फेल्ड कंसेप्ट को थोड़े डिपार्ट करते हुए इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट के पैराडाइम पर आना पड़ेगा। इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट का पैराडाइम का मतलब हुआ जमीन, जल, जंगल, जानवर के साथ जन का अनुकूल जीवन। उसके कारण लोक स्वास्थ्य, उसके कारण लोक शिक्षण और संस्कार। तब ध्यान में आएगा कि कमोडिफिकेशन का उत्तर है मातृत्व का भाव, और तब इस आधार पर माताओं का रोल सबसे बड़ा होगा। जब काम नहीं आए देवता, तभी तो जो पढ़ा गया था ना दुर्गा माँ के बारे में पढ़ा तो गया, लेकिन वो भी जो अवतरित जो हुई है, सभी देवी देवताओं को शक्ति संपन्न हुआ है, और सभी लोगों ने अपने वाहन, अपने हथियार सब दिए हैं। लेकिन लड़ाई किसने की? दुर्गा ने की। 64 योगिनियों ने की। काली ने की रक्तबीज के वध के लिए योगदान। वैष्णवी थी, ब्रह्माणी थी, उसमें बाकी लोगों ने सहयोग किया। वैसे ही कमोडिफिकेशन की जगह पर मातृत्व की विचार सरणी में, हृदय में स्थापना, यही आज की समस्याओं का उत्तर होने वाला है। उसमें हम सब भी उस पुण्य कार्य में सहयोगी हों, और इस दिशा में 2 दिन का चिंतन भी चले। इसमें मैं भी सुनने के लिए आया हूँ, समझने की कोशिश करूँगा, उसके बाद कुछ मैं भी उसमें कुछ योगदान कर सकूँगा तो करूँगा, ये प्रार्थना करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। Thank you, sir. I now request Shri Shankarana Munvalli to speak few words. भारत विकास संगम का फाउंडर आदरणीय श्री केन गोविंदाचार्य जी एंड श्री अजीत दादा टुकड़े, प्रेसिडेंट वेद वासुदेव प्रतिष्ठान, और मेरा ये सब का फंक्शन हो रहा है
रोटरी बेंगलोर और केली का लॉ कॉलेज एंड MBA कॉलेज IMSR दोनों कॉलेज का प्रिंसिपल जी और मंच पर विराजमान मेरा आत्मीय चंद्रशेखर डवलगी जी, श्री डॉक्टर रूपा डवलगी जी और ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಎಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ ಆದರಣೀಯ ಸಬ್ ಮುಖ್ಯ ಗಣ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದ UP, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗಮ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕಾರನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ KN ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ 2 ದಿನ ದಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಿದು ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-15%, 20% ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ KL ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಏನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಲೋಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಹುಬ್ಳಿ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ Hyderabad, UP, and so many organizations they have come through this function, Women and Academy and women related laws, women industry, women and cottage industry, ऐसा बहुत का ये है. आपका सबका स्वागत करके मेरा 1-2 शब्द वही कर दूँ. Thank you, sir. Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement and success have no meaning. I request Shri Shankarna Munvalli sir to felicitate the guests. Shankarna Munvalli sir to felicitate Shri KN Govindacharya, founder and BVS. Thank you, sir. I now request Dr. Anita Tilve to felicitate Ajit Dada Tukdeo.
I now request Shri K.N. Govindacharya to felicitate Shri Shankarana Munvalli sir. Shankarana Munvalli sir. I now request Srimati Rani Bhandari to facilitate Shri Suresh Agnihotri. I also request Srimati Manjusha Goturkar to felicitate Shri Ashok Tangsali. I now request Srimati Rupa Sidavalgi to felicitate Srimati Sharda Patil. I also request Rupa Madam to present the memento to Dr. Rajendra Prasad K. Hangandi sir. Rupa Madam to present memento to Dr. Vasudev Agnihotri. Also, I request Rupa Madam to present the memento to CA Dr. C.R. Davalgi sir. Also, Srimati Rupa Madam to present memento to Vivek Urgankar sir. Vivekananda Urgankar sir. Also, Rupa Madam to present memento to Dr. Anita Tilve. Thank you, ma'am. I now request Shri Vivekananda Urgankar, sir, District Convener of Bharati Vikas Sangh, to present the vote of thanks.
Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna. Thank you so much, Matru Shakthi Sangam, for giving me this opportunity. Really, it was an unknowingly it has happened, and Lord Sri Krishna bless us Almighty with His blessings, all of us. Thank you so much. I have no words to say, as well as supportive members of men. Thank you so much. भारत माता की जय. हरिओम. आज इस मातृ शक्ति संगम के कार्यक्रम में बहुत दूर यानी दिल्ली से आए हुए अपने राष्ट्रीय कन्वीनर श्री गोविंदाचार्य जी को मैं मनपूर्वक अपने कर्नाटक धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के भारत संघ विकास के तरफ से उनको धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि उनके समय ना होते हुए भी यहाँ तक पधारे हैं, उसका और एक बार मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। इसी के साथ इस महासंगम को यशस्वी बनाने के लिए हमारे केएलई के संस्था और उसके निर्देशक श्री शंकरना मुन्नवल्ली जी, वो भी हमारे इस कार्यक्रम से करने उनके सहयोग किया, उसके लिए मैं भारत विकास संगम से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इसी तरह अपने श्री अजीत दादा टुकड़े जी वो भी उपस्थित हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इस समारोह को जीके लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल और आईएमएस के प्रिंसिपल, उनको भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि उनके ही वजह से आज इस कार्यक्रम को यशस्वी होने जा रहा है। इसके अलावा सबसे महत्व, जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ऊंचाई पाए हैं और इधर अपने इस 2 दिन के समारोह में अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे, उनको सभी को मैं अपने भारत विकास संघ से धन्यवाद प्रकट करता हूं। इथे सगळे उपस्थित असलेल्यांना आणि ज्यांनी खूप दूरने इथे ह्या कार्यक्रमात आलेला सर्वांना मी आणखीन एकदा मनपूर्वक धन्यवाद प्रकट करतो। The session will be concluded by national anthem. I request Nimit Dwivedi to come over the dais. जने गणे मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलाधि तरंगा। तब शुभ नामी जागी तब शुभ नाशिष मागी गाहे जब जय गाता। जन गण मन मंगल अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। जया है जया है जया है जय 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 जया है भारत माता की जय। Thank you. Session 1 will be continued immediately, so please don't disperse from here. Thank you. निमित
I request session 1 compere to come on the dais and take over. MBA student Tejaswini. Thank you so much for the young Nimit. I request everyone to give him a round of applause, please. Thank you, Nimit. Thank you so much. Yes, I request everyone's attention, please. So now the session will be starting. So I request to go ahead with. Thank you. Happiness takes belief, time and effort. Stay patient while it all works out. A very pleasant morning to one and all present here. I, Tejasvi Bhopale from KLE IMSR, welcome you all once again for today's program, Matru Shakthi Sangam, organized by Bharat Vikas Sangam. Welcome you all. Now, I request the coordinator of BVS, Shri Ashok Kansale, to welcome the session. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ तुझे प्रणाम। आज का ये पहला सेशन जिसका विषय है वुमन एंड प्रोफेशनलिज्म। इस सेशन के सादर करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय एडवोकेट श्रीमती रूपाजी ढवळगी, आदरणीय श्रीमती शारदाजी कित्तूर एवं आदरणीय एडवोकेट श्रीमती मीराबाई हुबली, इन सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं और उन्हें मंच के ऊपर आसन होने के लिए आमंत्रित करता हूं। रूपाजी जो इन सभी महानुभावों का धन्यवाद, संत महानुभावों का धन्यवाद। इन सभी महानुभावों का सविस्तर परिचय करने के लिए अपने इस सेशन के को कोऑर्डिनेटर ऐश्वर्या जी को मैं प्रार्थना करता हूं। कुमारी ऐश्वर्या जी। परिचय यार Kumari Shraddha will introduce your yes. Thank you. Thanks. Good morning, everyone. I am Shraddha Krishnamurthy Pandit, the student of GK Law College. Take this immense pleasure to introduce such an eminent personality to the gathered assembly. Srimati Sharda Kittur ma'am is the principal of Nutan Vidyalaya English Medium School, Kalburgi. Madam was born on 7th July 1961 at Dharwad. She is married to Dr. Anand Tirtha Kittur, retired professor of economics and vice principal of Nutan Vidyalaya Degree College. Madam has completed her bachelor's in arts
degree from Women's College, Kothi, Hyderabad. Madam has completed her Masters in Public Administration from Osmania University, Hyderabad. Madam has done with her B.Ed and M.Ed from Karnataka State Open University, Mysore. Madam was a teacher and high school coordinator from 1994 to 2008 at Chandrakant Patil English Medium School. Currently, she is principal in Nutan Vidyalaya School, Kalburgi since 2008. Her hobbies includes painting and reading book. We are very honored to have you, ma'am. We welcome to this event. Now I request Adharani Sharada Kapoor ji to address the session. Thank you, sir. I, Mrs. Sharada Kitur, very happy to be part of this Bharat Vikas Sangam, which is organizing Matru Shakthi Sangam. I see all women here. I remember one quote, give us 33% reservations, you will find all beautiful ladies in the parliament. Yes, all are really looking very fascinating. I am very happy, I am very pleased also. In spite of sprain in my leg, I felt I should attend this program. I wanted to see all women here. Today maybe I'll be discussing about the women in academy. Just I want to make with your, I just want to make a small correction. The child who was comparing here, she used the word facilitating, being a mother, being a teacher, being the principal of the school. My dear child, it is not facilitating, it is felicitation to the great personalities. Sorry if I am wrong. The duty of a mother is to correct. So duty of a teacher is to correct. I have corrected my child. So let me first introduce, quality of any human society depends to a great extent on the quality of families. And a healthy and happy family is important element of a healthy and happy society. This is what I feel. Needless to say, woman is a gift of God to human beings. Woman in the form of a wife, mother, sister, mother-in-law, sister-in-law, daughter, daughter-in-law play a very important role in a family. And an educated and enlightened woman is a value and an asset and value addition to the family and the society. This is what I have been observing as a principal in the school. Woman in any role, as a life partner, a teacher, a judge, or a doctor, can make a great contribution in the progress and development of the society. A happy, successful, hardworking, educated, cultured woman not only leaves an indelible impression, but makes a positive contribution to the all-round progress and prosperity of the society. In maintaining the peace and harmony also, and in promoting goodwill and a better understanding among the different segments of the society, economy, polity, etc. She can build a nation by playing an important role in every walk of life, within the family and also outside, what we are doing today. It's not an easy task. We have to do everything at home also, and with pleasure we are coming out. An educated woman, we can contribute in more than one way. Not only in increasing the productivity in different sectors of the economy, but also in preserving and promoting human values in day-to-day life. Human values are very important. At this juncture of time, we feel human values are very, very important, and that's why it's rightly said, home is the first school and mother is the first teacher. So we are supposed to inculcate values in the minds of the children. Only thing that is needed is she has to come out of her inferiority complex. Most of us, we feel inferior. When we attend something, we feel we are inferior. And she is hesitating. Her hesitation we have to remove. Blind beliefs, illiteracy, and ignorance. And a happy and healthy and educated woman is a boon to human society. Let me start. Dignitaries on the dais and off the dais. It's not correct to say good morning, but we have to say good morning. Namaste to one and all. So,
topic for today's discussion, which is given to me, is women and academy. First, we have to know what this academy is. Academy is nothing but a school of special training. An official group of people, they become part of it, who are important in art, science, literature. And who are the members of this major stakeholders of academy are, first is Malakru, they are the owners, teachers, parents, and students, beneficiaries. The students are benefited by this. I would like to speak importance and impact of women as stakeholders. Wherever we go, we actually give something to the society. That's what I feel. We contribute. Across the world, education is viewed as a necessity, yet millions of women remain illiterate. But this sentence, sometimes I feel it's wrong. Government has taken measures, Constitution has provided the compulsory education up to the children, up to the age of 16 years. So I think every child is going to the school these days, but in spite of that, few of them are out of the schools because of poverty, social stigma, discrimination, lack of resources, and many more. Women's education is critical to the country's entire development. So it's similar to an effective medicine that may know how to cure a patient and recover the health. A well-educated lady is capable of managing both the personal and professional lives. A well-educated woman provides the skills, knowledge, and self-assurance necessary to be a better mom, worker, and citizen. A well-educated woman will also be more productive and well-paid at work. Indeed, if you invest, the return in education is often higher. I am proudly telling you this. An investment made on women, return is higher for women than for men. So, women's empowerment is an important element of every community, state or nation. In a child's basic life, it's woman who performs a prominent role. We as mothers, we take care of them. Women have a significant role in culture. Women's empowerment via education will result in good attitude change. As a result, it is critical for India's socio-economic and political development as well. The Indian Constitution gives the government the authority to take affirmative action to promote women's empowerment. Education has a huge impact on the lives of women. In past centuries, maybe 60, 70 years back, a biological fact of maternity shaped the traditional roles of the genders. Women performed the home-centered activities that related to the bearing and nurturing of children. Men did the work that required physical strength. Over time, however, family size contracted. Okay, we started division of the family size contracted. The community assumed greater responsibility for the care and education of children. We feel that children should be sent to the school, our children should become doctors and engineers. It developed, and packaged foods and household technology reduce the workload in the home. Now we are surrounded by so many things, and technology eliminated much of the need for muscle power at the workplace. Today, in the developed world, the only role still uniquely gender related is childbearing. If we are going to see real development in the world, then our best investment is on women. I proudly feel this. If women are placed in management positions or owners, then what will be the situation? In a study conducted by the Center for Creative Leadership, they found that having more women in the workplace, I proudly, please don't mistake me, but we are sincere, we are hardworking, and we are non-corrupt. And we actually, non-corrupt, that is the first thing I would like to tell you. And women, we have job satisfaction also, and we have organizational dedication and meaningful work. One thing also I want to tell you, let me come back after that. Their studies also projected that having more women at workplace positively related to employee engagement and retention. Also, Forbes mentioned that
Increase of women in the leadership roles. I would like to underline, increase of women in the leadership roles helps business to thrive and add up to their bottom line. Numerous studies and researchers performed all have to say a few things consistently that having more women in leadership roles will enable the world to add more money to country's GDP. We are sincere. And also for companies to maintain an inclusive culture, we take everybody together. I apologize also for correcting the child. Whatever the teacher teaches in the school, that is final. I have a grandchild. Okay, it's not a comment. We are supposed to teach the children correct things. Otherwise, it will be registered in their minds. When girls, educators, let me come to that point now. When girls are educated, their countries become stronger and more prosperous, said the great Michelle Obama. As we celebrate accomplishments of women across the country, we have to agree that female educators have played a crucial role in women empowerment. They have worked day in and day out towards better future of the world. They have achieved numerous feats in areas including technology, politics, entrepreneurship, and mostly importantly, education. Most of the women who are working as teachers are women in our country. In majority of the schools across the country, you will find female educators who have taught, molded, inspired, and influenced several students. Whenever a child comes to me, remembering me, I feel very happy and very proud because we are molding the children. So we should be sincere. That is what everyone feels. They say that behind every successful man, there is a woman. But I'm standing before you. I don't say I'm very successful. But whatever I am today, I give my credit to my husband. Today in Dharwad, I'm going to meet my teacher, school teacher, maybe after 6 decades. 6 decades. Okay, she is a very good mathematics teacher. She is in one of the old age home. Because whatever I am today, I should not give credit to my family members. I should give the credit to my teacher also. So behind every successful person, there is a teacher. In a country where girls are denied basic education, women educators are promoting gender equality and contributing to overall development of a child. Besides being catalysts of empowerment, female educators are forerunners of change. We would like to bring change in the society. Do you know, of the 80 million teachers worldwide, more than half are females. Okay, more than half are females. We should be proud for this. Teachers are integrated part of a school. For an education program to be effective, it's important for a teacher to be skilled or possess the required expertise. We should be confident, we should be perfect, and we should be expert in our own subjects. Beyond delivering everyday lessons, it's also necessary for a teacher to be an active promoter of gender equality. While nurturing a child's talent, interests, and creativity are vital, it's also necessary that a teacher transmits and implants social, cultural, and economic values in a student. Apart from this, I feel today's situation, moral teaching is also very important. Here is how female educators are cultivators. They inspire the children. The role of women cannot be underestimated. Studies reveal that girls are driven to come to school if their teacher is a woman. Then, especially in rural areas and remote villages, parents too feel comfortable to send their girl child to the school which is inhabited by female teachers. A major reason behind this is that beyond academic excellence, female teachers involve themselves with overall development. We actually talk to them, we share our feelings, they share with us, and we talk to them. We sympathetically hear to the child. Advisors, we are advisors also and role models. For years, teachers have been considered as role models and advisors. In primary schools and lower grades, having female educator is important as they can give their students motherly care. We are better mothers, motherly care, listen to their problems and concerns and be there for them during the times of crisis. When girl attains puberty, they go through numerous mood swings also, and often feel intimidated to open up to their parents.
During such times, teacher come to the help of that child. They are the best advocates. They can put a word with the school to offer better toilet and washing facilities, which will further encourage students to actively participate in school even when they are menstruating. In India, female educators are in a better position to represent a girl-inclusive environment that will promote. As a studies teacher, I would like to tell you, it was not an easy task for Savitribai Phule, his wife. It is an inspiring story of Savitribai Phule. She was the first woman teacher in India who went on to set up this first school for girls. And in Bhidewada, Pune, she was born on 3rd January 1831 in a family of farmers in Maharashtra. She was married at the age of 9 to 12-year-old Jyotiba Phule. She was thirst for learning, and which impressed her husband. That's why I say, behind every successful woman, not only men, men are also there. He was impressed by that. He taught her to read and write. She then went on to train, and she was a teacher in some schools in Pune also. She became the first female teacher in India, and she set up the first school for girls on 1st January 1848. Remember, 2022 also, we do not have modern ideas. We look modern. We are modern in dressing, but we do not have modern ideas. That is what I feel. On 1st January 1848, she starts a school for girls. And during those days, imagine, it was very difficult for a girl to come out of the house. Okay? So women were not allowed to step out of the house because they were within 4 walls they were supposed to be there. So when Savitribai used to head to the school every day, she started the school with 8 girl students. She used to go to the school every day. She was verbally abused and pelted with cow dungs by orthodox men. Her husband then handed her an extra sari. She used to carry one extra sari because cow dung. So she would walk to school receiving all the dirt that was thrown on her, reach school and change into clean sari. By 1851, we should be proud. She was running through 3 schools with 150 girl students. She contributed. This part I would like to, that 18th century, 1841, maybe Yeshwant's wedding under the Satya Shodhak Samaj or the Truth Seeker Society with no priest, no dowry, priest okay, no dowry and a very little expense. She even brought her son's fiancé for a homestay. How many of us will do that? Okay, before marriage, we will not bring the girl to our house, but she brought her son's fiancé for a homestay before the wedding, so she could get familiar with her soon-to-be home and family. She took all the household activities, so the young woman had time to study. An iconic figure for Indian, but at the cost of what? We are paying lot. We do not want liberty. We want to work at par with men. That's all. Feminism, we will not discuss about that because it is not my subject. So they have given, organizers have given only 15 minutes time for me. So let me complete this. She broke yet another taboo when she led the funeral procession of her husband after he passed away in 1890. She carried the funeral mud pot herself and led the procession. This is what Savitribai Phule was. In pursuit of completing her education, women as a mother. The mother as an educator. All of us are mothers here. We educate the child. We first teach them. Is the first teacher and the best teacher. The family enables children protection that makes parents responsible for their development and to make their children grow into a total personality. We give them everything. The role of the woman or the mother as an educator represents a crucial resource to the development of the individual identity, which from researchers is seen even as more important as the very marital status of the parents and the occupation of the parents themselves. I see so many people, parents today also, they come to me, they say that, now odilri, but we want to give good education to our children. That's what their wish is. They want to give them everything in their life. Maybe that also we are doing some mistake somewhere because we are brought up. Today whatever I am, we had nothing. Luxuries were not available to us. Maybe 40 years back, no luxuries. We had only 1 pair or 2 pair of clothes.
But today, everything is given to them, but somewhere something is going wrong. Mother is the best teacher. She has to understand this and she has to give good training to the children. Always in accordance with the biological as well as physiological relation of mother to the child, represents the first and reasonable part or the segment of the child's development. This for the reason that mother assures the child's life as she is the one who brings the child in this world. And further on, she raises them from being little towards reaching a total independency in mature life. The mother has a very important role, which is divided of functions. The first type is connected to the physical protection of the child, which means that the child must be provided health care and hygienic conditions. She could have a healthy life in future in a warm home environment in every sense of the word, including here the ambience where the child lives, which must be well enlightened, a healthy place when the child feels it, when the mother is next to him or her. Another group of activities in this regard are the maternal functions regarding child's development, involving here the physical development, the intellectual development, as well as the emotional development of the child. Each child which grows up and is educated in the presence of mother, for sure, is expected to reach an appropriate physical, psychological, as well as social development. In this regard, these children have a much better appearance. They look happy. If we are fighting at home regularly, parents, so we feel that change we find in the children. So here, in this regard, the children have a much better appearance. They are happy and they enjoy the childhood in general. They are communicative and as such, they are ready to cooperate. For this reason, mother's love and care to the child is full and well completed, and as such is often accepted by other members of the very family. This type of cultivated love and affection can be qualified as a key condition for an appropriate development of the children in a given family. The children experience the physical as well as the child, and as such they are taken as model, which influences their further development. Others nowadays have a variety of opportunities to be able to reach, which helps the child overall development and enables mothers to enjoy the fact of being mother. I would like to conclude saying, educating women and presence of women in all four components of academy, management of owners, teachers, parents, and students is very essential, because we can build them, actually add to the skills development, increase economic efficiency, support families, and improve the general quality of life. Whether the society believes it or not, an educated woman is saved from frivolous and misleading associations, local, state, or national level, as ministers, permanent secretaries, directors, chancellors, governors, and whatnot. So today I am proud, I am thankful. I thank all the organizers for giving me a chance to express my feelings. Okay, so let's be good mothers, good educators, good teachers. We can build the nation properly, because today's situation is very horrible. We cannot discuss anything about that. But as we were discussing, ruled our country, we have taken only modernization from them. Culture, everything, whatever is there in our country, we should imbibe all those cultures. Culture is very important today. I sincerely feel, being mothers, being teacher, being head of the institution, we should try to build up the development of the child with moral values and ethical values. Thank you one and all. If you have any questions, any discussions, you please tell me, I would like to answer. Otherwise, I thank you all organizers for giving me a chance to express my views here. Thank you very much. Let us all, being women, let us all build the nation. Let us all bring back moral values, culture, and whatnot. All good values to the children. Thank you very much. Thank you, ma'am, for the inspirational talk. Now I request Rupa ma'am to give the memento to Ms. Shraddha Kittur. To Shraddha Kittur. Thank you, ma'am. Now I'd like to call upon Harshita from KALI IMSR to give the brief introduction of today's guest,
G. Mirabai. Good afternoon everyone. I am Hashita from KLE IMSR College. It's my pleasure to introduce our today's guest. She had completed her education in political science, so ma'am is a legal advisor for Bank of Baroda, KSLDC. With this brief introduction, we welcome you ma'am. I request Rupa ma'am to present a memento to Mirabai ma'am. Thank you, Harishita. Now, we would like to take ahead with the questions from the participants. If any of the participants have any question from the guests, can go forward. Now, I request Meera ma'am to come forward and speak to few words. Good afternoon to everyone. It's my immense pleasure to be a part of the Matru Shakthi, and which is now in an infancy stage. And it is all we have to bring the infant Matru Shakti to a giant step forward. And in this direction, what my co-speaker had told is that the education is the primary step for empowering the woman. It was a hue and cry when the women were not educated and when women were subjected to many of the cruelties in the male-dominated society. Of course, it's a foundation, but education itself is not enough. Education is the basic, but you have to build the foundation with all other superstructures. That includes the legal education, that includes the medical education, that includes other specialities and skillful life education, and which makes her a perfect woman. And in this direction, we have to move forward. And here I am for you to explain the woman-related laws, because education is a basic and legal education is a top-up. And so I now speak on the woman-related laws. And first of all, you all should know that there are so many laws concerned to the woman, and there are so many laws also. And they have given me 15 minutes time. I won't be able to do justice to all the aspects of the laws concerned to the woman. But suffice for me to say some of the few major enactments pertains to the woman, which will empower her to be a better person. In this direction, I first of all tell you that our Indian Constitution is the mother of all the laws. Indian Constitution is considered as mother of all the laws because whatever enactment is done by the legislature, it will put into an acid test. That is, where the provisions of the Constitution are conflicting with the laws that has been enacted by our legislatures, which is inconsistent with the constitutions, it will be struck down automatically. And first we have to think, or we have to study the Indian Constitution as a mother of all the laws. And now we have to study what are all the provisions that are related to the woman in the Indian Constitution. And first, when I am speaking the subject woman related to the laws, is the quotation of a George Orwell, who wrote, all men are equal, some are more equal.
I think you all understood the implications of this, because when we discuss the laws related to the is very important, which states that there is a equality of laws and there is a equal protection of law for both. It does not discriminate between a male and a female. That is the first step. That is equality of laws and equal protection of laws. And when we say that equality before law, and when we say that there is a always equal treatment should be there, why there are so many enactments concerned to the women? That's the question that comes to everyone's mind. Hence, under these circumstances, I have to quote again Article 15 of the Constitution. Article 15, subclause 3 states that some of can be done specially for women. That is the proviso to Article 15. In these directions, many laws are made for the protection of the woman is concerned. And in Article 16 of the Constitution also, in case of an opportunities in the workplace also, there should not be any discrimination between male and female. And there are so many directive principles of the state policy wherein we can see that the woman should be respected, children should be respected, and there should be a common code or the uniform code for all the persons are concerned. This is the hue and cry of the present situations, because we are governed by the personal laws. Apart from the general laws, we are also governed by the personal laws, which comes into the conflict between our religion and the law. Under these circumstances, we have to analyze the personal interest, personal religion are relating, majority of the population is Hindus, which includes Sikhs, which includes Jains, which includes Buddhists also. And these laws applicable to the Hindus are more of a equal nature rather than the other laws related to the other communities. In this connection, I would like to state, I would like to take up the matter Hindu Succession Act. Hindu Succession Act is a very big giant for bringing the equality before a male and a female. And earlier, there was a new concept or a novel concept in Hindu laws that is called as a coparcenary system. And coparcenary is nothing but an inner circle of a family which consists only male members, no female were included. This was the coparcenary system that has crept in since 1956 or so. And the problem between the coparceners and non-coparceners are there will be again a division of the property, unequal shares are allocated to the male and a female. A daughter is considered as, daughter is having a lesser share than the son. This inequality is set at rest in the year 2005 by bringing an enactment or by bringing an amendment to Section 6 of the Hindu Succession Act, wherein the woman was also included as a coparcener and she is getting an equal right in the property along with a son. Daughter is now considered as a coparcener and daughter is having the same share of that of the son. And this is one way of bringing the equality of between the male and the female, and Hindu law is not falling behind. In Maintenance Act of 1956, a lady can adopt a child on her own, not on her account of her deceased husband or so, but on her own also she can adopt a child. And this is also a big leap in bringing the equality between male and female. And so far as Marriage Act, Hindu Marriage Act is concerned, the grounds of divorce are the same for male and female. There is no discrimination for male and female, and grounds of divorce are same. And
the first step that was introduced in Hindu Marriage Act is a monogamy system. Earlier we were having a polygamy system wherein a male can marry more than one wife. And this was cited as a monogamous system. Third thing is regarding the maintenance is concerned. Because we can see many paradoxes while discussing the women related laws, because it comes from the history also. Because we always remember the Manu. Manu is a first lawgiver of the Hindus, and we remember always the Manu first. And who says that na stri swatantra maharati, woman is not entitled for any freedom. And at the same breath, he also says that yatra naryastu pulsante tatra ramante devataha. We can see these two contradictions. The clashes in society, woman-related laws. Hence, we have introduced, because women are subjected to the male-dominated society, and she is having a lesser privileges. That's why we have provided a maintenance facilities for the women and children are concerned. The person who maintain his wife and ask for the maintenance from the father, if she is married, she can ask from the husband. And in this direction, there are so many laws relating to the maintenance. And first of all, I would like to state that the law relating to the maintenance was first introduced, considered as a criminal injury. That's why it has been included in the Criminal Procedure Code. Hence, that is punishable offense, and 125 is a step forward. Whether they are Hindus, whether they are Muslims, whether they are Christians, it doesn't make any difference, because it is applicable to all. In 125 section, we can ask for the maintenance for herself and for her minor children. And when we can say that there is a possibility of increase in the salary or increase in the status of a husband is concerned, we can ask for the enhancement also. This is concerned with regards to the maintenance under Criminal Procedure Code. And we are having a similar provision in Hindu Adoption and Maintenance Act also. Under section 18 of the Hindu Adoption and Maintenance Act also, we can seek the maintenance from husband. A separate residence also can be sought consistent with the income of the husband is concerned. And when we say that there is a dispute between a man and a woman, that is in case of a matrimonial disputes is concerned. Under these circumstances, how can a lady can enforce her maintenance against the husband, because who wants a divorce from her? This is a question that comes to everyone's mind. Under these circumstances also, under Hindu Marriage Act, there is a provision, section 24 of the Act says that during the pendency of the proceedings, she can ask for the maintenance from her husband. She can ask for the litigation expenses also when the husband himself has dragged her to the court. These are the concerned with regards to the matrimonial disputes are concerned. There is a separate provision for the custody of the child dealing with these kinds of the Act from 1956. And the situation has changed and the law has to be changed, and law has to change in tune with the societies. Hence, in 5, a separate enactment was made. Women is more in foreign countries than in India. And in this direction, a worldwide discussion was there with regards to the Human Rights Commission, and a separate act was made to prevent the domestic violence of women. And in 2005, an act was introduced to prevent the domestic violence. In this enactment, a woman can recourse to the lawful action against the person who has committed a domestic violence upon her. And in this act, there is not only the wife is protected, but all other ladies are also protected. It may be daughter, it may be other aged persons. They are all protected in this
not only the maintenance also, she can ask for the educational expenses, she can ask for the separate residence, she can ask for the shared household. If the person is having only one house, she can ask for the separate shared house also. And she can also seek for the protection from the police authorities if the man is committing a cruelty against her, if there is a physical cruelty upon her. These are the novel thinking of 2005 enactment, and which is giving a safety net for the woman is concerned. And other thing is, when we are stepped out of the house in order to work, we are facing so many problems from the male counterparts in the workplace. And in the workplace also, we were subjected to the so many insults and so many atrocities by the male counterparts, for which there was earlier there was no remedy. Apart from the IPC provision, that is section 354 of the IPC, which says that the woman should be treated nicely, and anything which disrespects the womanhood is punishable. But there was no yardsticks to say how it should be bring into the action. In this connection, I think you are all aware that Rooplal Bajaj's case is there. Rooplal Bajaj was a IAS officer. She was a very good officer, and she has been misbehaved in the public by KPS Gill, who is also an IPS officer, and under such circumstances, she moved the court. Under these circumstances, the courts have felt that the laws of existing at present were not enough to punish the person. And this led to so many controversies, and so many intellectuals have discussed about it. How to draft the legislation, or how to bring about a legislation so as to protect the working woman in the working environment is concerned from any harassment, and that too a sexual harassment. And in this direction, one case was there, Vishaka versus state of Orissa, wherein the Supreme Court has in the working place, and it circulated all the guidelines that should be the paramount in all the departments, but they were in the guidelines form only, and guidelines forms are not actionable. Hence, under these circumstances, the document called sexual harassment, and committee will make an internal examinations which will not reveal to the outsiders, and it will do an internal examination of her complaints, and there is a provision to punish him either by decreasing his increment, or by giving or by transferring the person from that place to another place, and so many other remedies which are reserved for the superior to take action against the culprit. Hence, these are all the laws where we can have an equal rights along with a man, and where we can be protected also from the atrocities of a male, either in home or mere. My lectures may not be helpful. Your questions will be answered as far as my knowledge is concerned. Hence, I would like to be a more interactive sessions so that the woman empowerment will be a reality. And one more thing I would like to add is that I would like to thank the organizers for giving me an opportunity. But another kind of suggestions I would make for the Matru Shakti is that it is not only the empowerment in the superstructure. We want the empowerment in all the true nature. That is, emotional empowerment should be there, spiritual empowerment should be there. It is not that we should be educated, we should get the job, and we should earn ourselves, we should live happily. That is not enough. We should be a part of the society, and we should move on as a equal partner of a society. And we should move forward in order to bring a better society wherein both can live happily. In this direction, I would like to make a suggestion that Matru Shakti Association should inculcate
the emotional aspects and the spiritual aspects and cultural aspects of the empowerment of the woman. I thank you one and all for the patient hearing. Thank you, ma'am, for the informative speech. Now, I would like to go ahead with the questions from the participants. If any of the participants have any question, can ask. Ma'am, I had a question. My name is Zuha and I'm a student of GK Law College. Ma'am, my question was, I had a question for you here. Ma'am, I had a small contrary doubt. When we talk about empowering women and equality, 75 years from independence and all the empowerment we have received, we are in a process of receiving empowerment women. But there are also places where empowering women and giving privilege to women, there are men also who are being victimized. What is your opinion on the concept that You can speak here. You can come here. Now it is not audible. Well, earlier I have audible, it was, I think mic stick on. My question is, 75 years of independence, women have been empowered, we are still in the process of getting empowered. There are cases where giving extra privilege to women, men are also being victimized. There are 1% of men who are also being victimized at workplaces. They are not able to stand up. So, what is your opinion on the fact that instead of giving extra privilege to women, we have uniform civil code where men and women are being treated equally in the middle? It's a very good question. Pardon? Empowerment of women will make the empowerment of men also. It's a good question. That's why I felt the need of the spiritual and the emotional aspects of the matter in regards to the empowerment. Because our basic nature of woman is not subject the men to a cruelty. We are not intending to do cruelty against the woman. We are only asking ourselves come out of the cruelty from the men. That's the main question. That's the main difference between us. And in this direction, of course, they are subjugated. Male are being subjugated. I am seeing this in the every day in the court. And for this, the reason is not the law, but the woman who handles the law. There are so many laws are there, and how to handle the laws, that is also an important, because one weapon will be there. A weapon can be used as a sword, as a weapon to harm the others also. Under these circumstances, I request the women folk to have the legal assistance as a sword, not as an offense, not as a weapon. In this direction only I have asked the Matru Shakthi to take more action, because nowadays the male are being victimized, because we have seen the world has changed a lot, because women were subjected to the cruelty for more than 50 years. Now it is the male will be victimized for another 50 years. That should not be the case. That should not be the intention. Only thing is that we have feminine energy should be made strong, and it should not. It is left to the wisdom of a woman and who are capable of taking
the perfect use of the laws that are existing, and she has to protect the family, she has to protect the society also. It is the responsibility of her only. Hence, how to use the laws that are existing, it should not be the victimization of the woman, it should only useful for the safety of the woman. Uniform civil code is always a welcome thing, and we have expected that in the BJP government, we were expecting the uniform code will be implemented. That is always discussions that is going on, and section article 44 of the directive principles of the state policy, there is a uniform civil code is to be provided. There is a directions. And forefathers of the constitution in way back 1950 itself, they have made a uniform civil code should be the reality of India. But so far, it is not been passed for the best reasons that is known to our politicians. But we all hope that the uniform civil code will become a reality soon. It is because of lack of knowledge. First of all, it's because of lack of knowledge. And second thing is there is a fear in the women. When I go to the court, society will look upon me as a down. And in order to exercise my right also, I will be restricted. Of course, there are rights we can exercise, but exercising method and the society's lookout is different. And society's outward attitude also should change towards the laws. Only law should not be changed, the society's attitude also should be changed. And nowadays, that is not the case. Because in many of the cases, we are finding that women are coming forward and exercising their rights properly. Any more questions? Also laws for the implementation. It is not only in curriculum, there is a implementation mechanism is also there. If you feel anything, you can go to the court. There is a mechanism also. It is not in the law. And if we are providing an equal rights or the equal protection of laws in books only, it should be a reality when it comes for the enforcement is concerned. There is an enforcement mechanism. Suppose a daughter is not given an equal share along with a son, she can move the court. She can go to the court and seek for the partition, and she can ask for the equal share along with that of the son. There is a mechanism. And she has to make use of that mechanism. Similarly, in case of the sexual harassment in workplace is concerned, as Madam has stated, that there is a subjugations because the woman will not come forward to say anything that injustice was done to me. And if she is not complaining and if she is meant to suffer injustice, they have no answer. There are no answers. But we have to exercise our rights in a rightful manner. Now the Indian Constitution is made as a compulsory subject for all the graduates.
And if you study Indian constitution correctly, you need not go for the other acts also. That much best it is. And you will study Indian constitution as a neglected subject. In all the degrees level, whether it is engineer course or whether it is a other course, professional course, Indian constitution is made as a compulsory subject. That brings you an idea of how the acts are enacted and how the laws are helpful for the general. Excuse me, sir. Ma'am has a question. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿರ್ಮಲಾ ಹಿರೇಮಠ ಅಂತ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದೀನಿ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತು ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾರ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ರಾಯಚೂರಿಂದ ಬಂದಿನಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಶಿರವಾರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರ ಇನ್ನೂ 9th ಇರ್ತಾರೆ, 10th ಇರ್ತಾರೆ, ಆಗಲೇ ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಾ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಸಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಹತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 300ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕೂಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ದಿನಕ್ಕೆ 300ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲ, ಮನೆ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. Economic disadvantage is there in India. It cannot be washed away in a overnight. It is a process and we have to move in the process. ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಪಿಡುಗು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಅದೇ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಅವಳೇನಾದರೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅವಳೇ ಮುಂದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು IAS ಆಫೀಸರ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆತನ ಅಷ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ಬರೀ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಅವಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋವಂಥ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಅದೇ ಬರೇ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲ, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಆಮ್ಯಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲ್ಲ. Yes, can you hear me please? Madam, question to Kittur madam.
Now there is a lot of degradation in the morals of the society. I am one man who is working for the empowerment of women, but I have got a lot of difficulties. Like you said, like you have got Stri Shakti, but Purush, you know, what is a man? Purush is Sahan Shakti. For every ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೇಳಂಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳಿರಿ. Hereby I conclude this session and I thank Sharda Kittur ma'am and Meera ma'am enlightening us more laws and human aspects as she helps the day to day in life as to father, son and support a backbone to her family. Thank you ma'am, both ma'am. फॉर वोट ऑफ थैंक्स हियर मैं अपना शारदा कित्तूर जी का तहे दिल से थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने वुमन और एकेडमिक पर बहुत अच्छी बात कही है. उन्होंने कहा कि वुमन इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट थिंग, इन्वेस्टमेंट डन ऑन वुमेन इज अनदर. Respected Mirabai ji has enlightened so many points here. One thing, he has given a very best example on animal farm, that all animals are equal, but some animals are more equal. That was there. And another is a lady also can adopt a child, and provisions of domestic violence. You have very enlightened that points. I thank you, all of you, and all the audience, and this session will be concluded here. Thank you very much, everybody. अभी लंच के लिए ब्रेक होगा. हम एक सेशन बिहाइंड है, एक सेशन अभी होना था. थोड़ा तुरंत लंच करके सबको आने के लिए विनती करते हैं. एक दो सूचना हम देते हैं. एक शाम को ऑर्केस्ट्रा, ये इंटरनेशनल एक आर्टिस्ट, रिनोड आर्टिस्ट है बालचंद्र नाकोड़ा करके, उनका एक इधर कल्चरल प्रोग्राम है 6 बजे. वो कार्यक्रम में सभी रहना ऐसा हमारा विनती है. और all male members will be visitors. They can hear from this conference whatever deliberation going on, they can collect it. And दूसरा सूचना है, जो भी थोड़ा स्पीकर भी है उनका स्ट्रिक्टली टाइम टेबल फॉलो करना. सभी स्पीकर को हमने दिया है 15 मिनट का टाइम, और जो एक्सटेंड करेगा उनका स्पीच अच्छा रहेगा, मगर वो स्पीचर माइनस हो जाएगा हमारे दिमाग में. वो ध्यान रखना कि ये पूरा टाइम टेबल है. सब पूरा एम्पावरमेंट का ये थोड़ा डिसिप्लिन लेना है. इसके हिसाब से ही कॉन्फ्रेंस हमको चलाना है. कल भी 2 अवार्ड का सेरेमनी इधर होगा 12 बजे से 2 बजे तक. नेशनल बिल्डर अवार्ड करके जो भी टीचर काम कर रहे हैं, ऐसे 25 टीचर को सम्मानित किया जाएगा, तो उनके कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं. ऐसे भी प्राइड ऑफ वुमन, प्राइड ऑफ इंडिया वुमन करके हमने 25 लोगों को जो भी संस्था काम किए हैं उनको भी अवार्ड दे रहे हैं. उनका पूरा बायोडाटा और डिटेल सबको जानकारी मिल जाएगा, सबका साथ संवाद भी हो जाएगा. ये कार्यक्रम है, सबको जानकारी के लिए बता रहा हूँ. थोड़ा टाइम टेबल फॉलो करने के लिए तुरंत भोजन करके सब अंदर आना, ऐसा हाफ एन आवर का रिक्वेस्ट है. थैंक यू.